ದೇಶದಲ್ಲೀಗ ಲೋಕತಂತ್ರದ ಮಹಾಪರ್ವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಜನತೆ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಗೆದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 370 ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಚಿತ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರಾದ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಜನತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮಾನ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. पूरे विश्वास से ये जरूर कह सकता हूं कि देश की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार एनडीए को 400 पार सीटों का आशीर्वाद देना है और भाजपा को 370 प्लस देना है. फिर एक बार मोदी सरकार, ये बात जनता के मन में बैठ चुकी है और जनता आज जब पहले फेज की पोलिंग चल रही है, कमल पर अपना आशीर्वाद न्यौछावर कर रही है. पीपल of our great country Bharat have made up their mind to bless the tallest leader in the world, Shri Narendra Modi ji, yet again and ensure that he becomes the Prime Minister of our country. And people have this very strong sentiment that Shri Narendra Modi ji has earned this third term through his perseverance, his development policies, no discrimination on the basis of religion, caste, creed, sex or race as enshrined in the constitution. And when I come to Karnataka, Karnataka holds a special place for every Indian and also for Shri Narendra Modi ji. I've been told he was here just a few days back seeking the blessings of all Kannadigas, and thus the NDA and the Bharatiya Janata Party believes and strongly believes that all 28 seats in the state of Karnataka will be won by the NDA and the BJP. And why do I say that? I say that because the last 10 years have been the most progressive for our country, where there has been all-round development for all. We all know how the economy of the country has become the 5th largest economy in the world. We know how every citizen has been empowered by the schemes of Shri Narendra Modi ji. Like 12 crore toilets have been made, around 12 crore houses have water in the taps, tap connections have been provided, 10.5 crore gas cylinders have been given. And when I am sitting here in Dakshin Kannada, I would like to also share a few numbers which are of great relevance for the people who are residing here. The farmers of the area, there are 1.5 lakh farmer families that have benefited from Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi.
rupees 6,000 per year. This is only about Dakshin Kannada area. 5 lakh health cards have been issued. This ensures that every citizen has the right for effective treatment. This wasn't seen earlier in any of the governments. 5,000 houses have been made in this region alone, and we all know 4 crore houses have been made in the last 5 to 7 years. And now the Sankalp Patra of the Bharatiya Janata Party again reiterates that 3 crore more houses will be created to ensure that every family has a house of its own. Similarly, 1.5 lakh toilets have been created in this region. And the Sankalp Patra, just 2 or 3 broad outlines. You all know when it comes to national security, Shri Narendra Modi ji is the man. We all know when it comes to ensuring that India becomes a global leader, successful hosting of the G20 summit, Shri Narendra Modi ji is the person who makes it possible. And the Sankalp Patra makes it very categorically clear for the next 5 years, the free ration that is being provided will be continued. That's a highlight because it touches the lives of 80 crore Indians. That is our commitment to the common man. For the women, there is another Sankalp or resolution in the Sankalp Patra of the Bharatiya Janata Party which says 3 crore लखपति दीदी सुनिश्चित करेंगे। ये बातें मैंने इसलिए पृष्ठभूमि रखी कि जब मैं बात करूंगा जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारे विरोधी हैं, तो पहले ये बताना आवश्यक है कि पिछले 10 साल में क्या सकारात्मक कार्य हुए और अगले 25 साल का एक खाका, एक विजन श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए रखी है और कह रहे हैं 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत एक विकसित देश होगा. इट वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड देयर हैज टू बी अ रोड मैप फॉर दैट. And that is why these facts were very important. On one side, we have seen the confidence that is oozing because people firmly believe their better and brighter future lies with the leadership of Shri Narendra Modi ji at the center. We have believed in progress, in development, in equality of every citizen. But it also pains me, it saddens us when I am raising these issues. These are not any political issues, rather there are issues which need to be raised from this platform because the state government headed by 5.5 chief ministers in Karnataka has completely failed. And who are these 5.5 chief ministers? The first is D.K. Shiv Kumar. He is not interested in the welfare of the people of Karnataka. Rather, he is waiting to be the CM. He only wants that he should become the chief minister. जनता से मेरा क्या लेना देना है? मुझे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार है. The second is Mr. Parmeshwar, again an aspirant. Third है प्रियंका खड़गे. Some people say he is the super CM. फिर वंशवाद आता है. अगर पिता अध्यक्ष हैं तो फिर सुपर सीएम बन गया मैं, तो मैंने क्या गलत किया? ये तो मेरा बर्थ राइट है, मुझे जनता से क्या लेना देना.
चौथा डॉक्टर यतेंद्र हैं, पांचवा ये और इंटरेस्टिंग है, ये CMCA कहते हैं इन्हें, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला। ये यहां पे चीफ मिनिस्टर के भी ऊपर बताए जा रहे हैं और साथ में कमीशन एजेंट हैं ये, जो कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार की ATM मशीन है उसको यही ऑपरेट करते हैं। जो नागरिकों का धन है उसको दिल्ली कैसे पहुंचाना है, काली कमाई वहां तक कैसे पहुंचे। मैंने 5 नाम लिए तो सब पूछेंगे भाई आधा CM कौन है, तो आधा CM जो है वो सिद्धारमैया है, क्योंकि उनकी चल नहीं रही, ये मॉडल है 5.5 CM, the half CM doesn't work, there are 5 more CMs pulling the state in different directions, and I will elaborate why do I say that. That is the charge people of Karnataka are making. Just yesterday, a very sad news, which was part of the news coverage even on the national media. A very young girl, our sister, she was stabbed to death. Stabbed to death for no fault of hers. She exercised her right to say no to a youth. Now, definitely, when you indulge in appeasement politics and you start hating the majority Hindus, the criminal elements in society are emboldened. But I would also say this is also a clear indicator that law and order in the state of Karnataka has completely collapsed. Collapsed just like the principles of the Congress party, the leadership of the Congress party, and to the extent to emphasize on the seriousness of the issue, every citizen has the right to feel protected in a state where there is an elected government. But I am told that our sister's father happens to be a Congress corporator, and he's made a statement that the state government is to be blamed for this, and very rightly so, because it raises a question that when a corporator of a party that is the ruling party in Karnataka is not safe and his family is not safe, and he can't get justice from the state government and the police, why should the common man of Karnataka have faith in such a corrupt, such a communal and criminal government? 3 C's for the Congress: the corrupt, the communal and the criminal government headed by the half Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. So my first issue that I have raised is relevant for every citizen, every sister, every father, every mother, every family of Karnataka, that you couldn't even guarantee the security of our sister. The family is bereaving and the Bharatiya Janata Party stands with the family, and we will ensure that justice and quick justice, speedy justice and effective justice is ensured for the family that has suffered this great loss. And we will also ensure that this government wakes up from its slumber and starts protecting the people of Karnataka. The second point is again very relevant. On one hand, we have Shri Narendra Modi ji's dynamic leadership, where
tasks that were considered impossible, जो कहा जाता था असंभव है, उस असंभव को संभव बना दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेशनल सिक्योरिटी हैज बीन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि पुलवामा का हमला हुआ, यही कांग्रेस पार्टी तंज कस रही थी, कहां है 56 इंच की छाती, और 10 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। भारत की वीर सेना ने, जिसको खुला हाथ खुली छूट श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी, घुस के ठोका। हमने ऐसे मुल्क को जो हमारी तरफ गलत निगाहों से देखता था, ये हमारी ताकत है। इन्होंने कहा पीएफआई पे बैन नहीं लगा पाओगे। श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का एक ऐतिहासिक फैसला आया, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, और पीएफआई पे बैन लगा और अभी एक्सटेंड हुआ। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से और दुख के साथ मैं कहता हूं, 50,000 वोट के लिए 50,000 वोट के लिए कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि पीएफआई बैन हुआ, उसका राजनीतिक संगठन जो है एसडीपीआई है, एसडीपीआई ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, शांति, एक शब्द नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी साइलेंस। सोनिया गांधी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आज क्या ये दायित्व नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी का, और इस मंच से मैं ये बात उठाता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। एसडीपीआई का समर्थन आप लेते हैं इसलिए क्योंकि आपको बहुसंख्यक हिंदुओं से तो नफरत है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति आपको पूरी करनी है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी के साथ जोड़ते हुए मैं बताता हूं आपको, देखिए ये वो कर्नाटका प्रदेश है जहां से शहादत देने के लिए भी हमारे भाई आगे आते हैं। भारत की फौज ने जनरल देखे हैं इस प्रदेश से, और वहां पे कांग्रेस का सांसद चुना जाता है और विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। भारत माता की जय कहने में शर्म आती है कांग्रेस पार्टी को, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब इनका एमपी राज्यसभा से नासिर हुसैन चुना जाता है। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि भाई चुनाव हमारे संसद के थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और आप फिर चुपचाप बैठे रहे? क्या किसी ने राहुल गांधी का एक वक्तव्य इस पे सुना? क्या खड़गे जी ने कहा कि ये गलत हुआ? क्या सिद्धारमैया बोले? हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था शुरुआत में, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि ऐसा हुआ नहीं है। बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पाया गया कि ऐसा हुआ था, एफआईआर दर्ज दबाव में करानी पड़ी। तो ये जो मुद्दे मैंने आपको बताए, ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाज में नफरत के बीज बो रही है, और उसके साथ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आधा मुख्यमंत्री मस्त है, उसको कोई चिंता नहीं है। रामेश्वरम कैफे का बॉम्ब ब्लास्ट एक और उदाहरण है। ये कोई सिर्फ प्रदेश को लेके या किसी शहर को लेके एक घटना नहीं थी, एक बहुत बड़ा आतंकवादी एंगल था इसमें, और एनआईए ने इसकी जांच की शुरुआत करी तो आरोपी भी पकड़े जाने लगे। और जैसे
कर्नाटका में ये लोग शरण दे रहे हैं आतंकवादियों को, कानून तोड़ने वालों को। 2 की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई, क्योंकि हमें पता है वहां पे भी तुष्टीकरण वाली सरकार है। तो सबसे ज्यादा, इफ देयर इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, if there is a breeding ground, and if they know that they will enjoy all patronage from a state government, it is happening because a Congress government, which has become anti-Bharat, anti-Hindu, pro-terrorist. And that is why people are now waiting to give a befitting reply to such a Congress state government. With these points, I just want to summarize what I have said. 2024 Lok Sabha elections are the most defining elections in this country that have ever happened, and I'll tell you the reason. People are fed up of parties that spew venom against the majority community, because we are all equal. The Constitution of India, and being a senior advocate, I would lay emphasis on this, gives right to every citizen to feel equal, to get empowered. But that spirit of brotherhood, of fraternity is being violated by parties that indulge in appeasement politics, especially the Congress, the TMC, and other political parties as well. Second, Bharat wants to move forward. It wants to move forward, and the aspirational youth today feels that if I am capable, if I work hard, I have the right to be recognized and get the position I deserve. And this is the idea that nepotism ridden Congress can't approve of. Congress is synonymous to dynasty. The NDA, the Bharatiya Janata Party, is synonymous to merit. And third and last, for Bharat to move forward, the NDA and the BJP, especially our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, knows that Karnataka has to take lead. And thus, it would not be wrong to say कि नरेंद्र मोदी जी के दिल में कर्नाटका है और कर्नाटका के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी. He has earned this place through his hard work, through his sincerity, through his perseverance, and the love that he has for Bharat and for the great state of Karnataka. It is also a reflection of what I just stated, anti-Bharat Congress Party. The national spokesperson of the Congress Party very clearly stated, and I had also raised this issue as the spokesperson of the Bharatiya Janata Party, कि जो नक्सलाइट्स हैं वो शहीद हुए हैं. नक्सलाइट्स कब से शहीद होने लगे? गोली खाते हमारे जवान हैं, सबकी जान बचाते हमारे जवान हैं, और कांग्रेस पार्टी को चिंता हो रही है तो वो नक्सलाइट्स की हो रही है. एंड द होम मिनिस्टर वेरी कैटेगोरिकली lauded the efforts of the paramilitary forces. We salute them, and I think this is the difference between the ideology of the Bharatiya Janata Party and the anti-Bharat Congress Party. And I would add to that, I had the privilege of being in Chhattisgarh also for election campaigning. Another leader of the Congress Party, Raj Babbar, while he was in Chhattisgarh, he was asked a question on the issue of Naxalism.
and he called them Krantikari. So if you connect the two, this is a 6.5-year-old statement I am talking about. 6.5 साल पहले वो क्रांतिकारी थे, अब वो शहीद हो रहे हैं. दर्द किसको हो रहा है? सोनिया गांधी को दर्द हो रहा है, राहुल गांधी, खड़गे जी रोते हैं बेचारे. And if you connect बाटला हाउस एनकाउंटर, जिस इंस्पेक्टर ने जान दी, इंस्पेक्टर शर्मा, उनके लिए सोनिया गांधी नहीं रोई थी. सोनिया गांधी की आंखों में आंसू तब आए थे जब उनको बताया गया था कि ये जो 2 आतंकवादी हैं ये मार दिए गए. दिस वुड कंप्लीटली एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी बिकॉज दे हैव लव फॉर पीपल दैट वी हेट and they hate the people we love. और इसीलिए इनको जवाब देना अति आवश्यक है. I've been told that the guarantee card of the guarantee that was given by the Congress party has expired. And I cite 2 examples out of the 5 guarantees that they had said. One was, we will give 200 units of free electricity. Now I have been told that it has not been implemented, rather the electricity tariff, which became a national news, has been increased by ₹3. So first promise completely broken. People cheated just the way Congress has in its DNA the art of cheating the citizenry of the country in Karnataka. Second is even more important, and I would lay emphasis on this. There was a promise stating 10 kg of ration will be given to every person in the BPL family. So I checked again, and best to my knowledge, with utmost responsibility, I say that promise also remains unfulfilled. Rather, the 5 kg ration that is being given by the central government, the credit of that is being claimed by the state government, cheating the people of Karnataka. And if I could add to it, because it's also about national elections, please do check what they have done in Himachal. They had said that there is too much of inflation, आम आदमी को राहत देंगे. डीजल पे वैट 2 बार बढ़ाया, 3 रुपए. इन्होंने राजस्थान में, अब सरकार में नहीं है, लेकिन कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, गारंटी थी. किसानों की जमीन जब्त कर ली और एफआईआर कर दी. ये विधानसभा के पटल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान है. I have cited these examples to tell you that सिर्फ कर्नाटका को धोखा नहीं देते, ये हैं ही धोखेबाज, इनके डीएनए में धोखा है. जिस प्रदेश में जो वादा इन्होंने किया, एंड आई कैन ऑल्सो गो टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, जहां पे इनके मैनिफेस्टो जो आए थे उसके विपरीत कार्य कर रहे थे. बट आई थिंक इट वुड सफाइस टू शो द 2 examples that I have given from their promises they made in Karnataka, the Himachal example that I have given, and also the state of Rajasthan when they were having a state government in the state. There has been all-round development in the northeast region. There is a look east policy, act east policy, and we all know how there has been complete integration in terms of providing infrastructure, quality education and health. But since you asked me about Manipur, I would definitely like to say one thing. The facts are that the Home Minister of the country, Shri Amit Shah ji himself, had visited the state. The fact is that Minister of State had also been camping there
to ensure that normalcy returns. And with the effort and the leadership of Shri Narendra Modi ji, in a very recent interview just a few days back, he very clearly stated that the situation has improved there. And I am sure that if the Home Minister of the country is present there and he works under the guidance and leadership of Shri Narendra Modi ji, it matters to the people of the state as well as the country. And I am very hopeful the best is yet to come. The golden era for the state and Northeast is yet to come, and it will surely come with Shri Narendra Modi ji again becoming the Prime Minister of the country. 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಜನತೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಕಾರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸಬಲೀಕರಣವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿವೆ ಎಂದು ಭಾಟಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಭಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.